concerns about price. इसीलिए मेरा जवाब भी थोड़ा पॉलिटिकली मैं देने की कोशिश कर रहे हैं सर। इसीलिए किसी मेंबर को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, एट द सेम टाइम जवाब सुन करके ये क्या है, राजनीतिक भाषण दे रही हो, राजनीतिक भाषण सुनना ही पड़ेगा। तो शुरू कर दिए हैं, ठीक है जी, आपने शुरू कर दिया है राजनीतिक भाषण। आपने बोले स्टार्ट आपने किया। सो इस बीच में ऐसे इंटरप्शन आना भी मुझे कुछ दिक्कत नहीं है सर। मैं बिल्कुल आपकी अनुमति से आगे बढ़ती हूँ। आपको तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं सदन में व्यवधान नहीं पैदा होने दूंगा। हाँ सर, आप है इसीलिए मैं उसके ऊपर चिंता नहीं करूँ। आप उनको परमिशन मत दो कि वो व्यवधान पैदा करें। Sir, let us please be in this house looking at India today compared to what is happening in the rest of the world. Just 2 or 3 highlights will tell you where India is compared to the rest of the world, and why should we have to compare with the rest of the world? Because whether it was in 2008 or usse pehle, we have never seen a calamity of this kind, a pandemic of this kind, and coming out of the pandemic, even as all of us were trying to make sure that people in our constituencies, people in our states, people in our area are given that extra help, each at our own level. I recognize that everybody, members of parliament and also state governments, have all played their role. Otherwise, India today will not be where it is compared to the rest of the world. So I fully credit the people of India for this kind of a, even against adversity, that we are able to stand up and be recognized as the fastest growing economy. And this is not my assessment. Repeatedly, in the last 2 years, both World Bank, IMF, and many other agencies are periodically giving an estimate of what the global trade is going to be like, what the growth of the global GDP is going to be like, and also recasting their assessment about what the world's growth is going to be, and by country, what the assessment is going to be. And each time when they have reviewed, when they've downgraded the global growth, when they have reassessed, saying, no, it is not as we thought 6 months ago, it is worse. It is getting worse. In each of these times, India also has been reduced in terms of the growth it is expected to achieve. But even after that, we remain as the fastest growing. If it was with 8.2%, now it may be 7.4%. But even as the entire globe's growth is being reviewed, reassessed, re-estimated, each time we remain at the highest. So it is important for us to, first of all, as Indians, appreciate that our people have gone through this pandemic, Delta wave, Omicron wave, and after that the way in which global value chains have hit us. But in spite of that, because of the various steps taken by the government and also by the Reserve Bank of India, we are remaining much better than most countries. I think we... No, माननीय सदस्य, देखिए माननीय सदस्य, 1 मिनट माननीय मंत्री जी, 1 मिनट। माननीय सदस्यगण, आप सबने अपनी बात रखी, मंत्री जी ने आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुना, कोई बीच में इंटरप्ट नहीं किया। मेरा आपसे आग्रह है, आप भी उनके जवाब को पूरा सुने। सबको बता दिया माननीय मंत्री जी।
So, globally, when the situation is really like this, and every agency after agency is assessing the situation by country, and repeatedly in their assessment, India has remained the highest, I think this House, irrespective of the party differences, will have to feel proud for this country and its people. They have struggled. State governments have helped. People are dying, farmers are committing suicide. How can we be proud? अरे कोई बीमारी है क्या भैया? कभी अभिमान नहीं होगा इस देश के ऊपर। एक मिनट आप देश तो हमेशा रहेगा। And it is exactly this, sir. It is exactly this which I'm trying to address. It is not that the country doesn't have problems. We have to work together to do it, and we are trying to do it. But even as we are trying to do it, and even as the global agencies are saying, this country is suffering like that, that country is suffering with these problems, a third country is suffering with something else, and India is like this. It's a moment that all of us will have to be true to ourselves, rather than, excuse me, ma'am, do you have a problem if I speak? There's nothing about warring here. I'm sorry, I take objection to that, Honorable Speaker, sir. Why are you getting so excited, madam? Because you are there in front of me, sir. You are there in front of me. Before I complete one sentence. Oh, thank you very much. The person who's mercurial in this House tells me not to be excited. I take your point. Mercurial. So, sir, it's important for us to, for all the members, through you, I would like to say, I'm quite convinced of every input given, and I think it's my duty to respond. But even before hearing me, if there's mockery, I will take it definitely seriously to reply those who like to mock rather than hear. So I would seek your indulgence on that. Sir. Sir, this is why I want to say this to you. When there can be interruptions which are serious, and when there are mocking tone coming from there, I reserve my right as a member of this House to reply to those. And if that is treated as dhamki, what should be the first one which comes? Treated as mocking or dhamki? Sir, she is not a member of this House. Oh, thank you. Otherwise, I wouldn't be. All right, in that house or this house. Dada, you're always very keen on coming up with things which are not so relevant for the conversation. एक मिनट, मैं सभी माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करूंगा कि आप बैठे बैठे टिप्पणी न करें, और माननीय मंत्री जी इनकी बेटी टिप्पणी को आप सुने नहीं, क्योंकि कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, और ये मैं अपेक्षा करूंगा बेटे बेटे को टिप्पणी नहीं करें, नहीं तो मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा. I'm not a member of this House, but with your permission, I'm here because I have to reply, sir. So the senior member, Saugata Roy, should probably take that into his, system. Oh, thank you, thank you. Please recall your glorious days when you were trying to talk to me about onions, na? Recall those days, because you always had that approach to women in the House. Sir. आप बोलिए ना, आप बेटे बेटे टिप्पणी मत सुनिए आप कोई. Sir, the GDP of the US
fell 0.9% in the second quarter, following a 1.6 decline in the first quarter, marking a start of what they call themselves an unofficial recession. There were some members who were saying, even Adirji mentioned, are we going into a stagflation? And will the finance minister please reply? I will first of all start with the last speaker, but the leader of the opposition here. There is no question of India getting into recession or stagflation. Adirji, you please be assured there is no question of us getting into either a stagflation or, like the US, they may say technical recession, whatever. Please. Mani Suresh, please. No. No. Sir, it is not just me, sir. No. A Bloomberg survey, which was done by economists, sir, has said that zero probability of India slipping into recession. So it's not just me saying, there is zero probability of India slipping into recession, even though there are several major economies who are in substantial risky position of getting into recession. So again, because we are comparing, I start with comparing things which are happening globally and also position myself in telling about India. Bank and bank's health are equally important for looking at the economy and its situation at any point in time. Compare globally. 4,000 banks in China are reportedly on the verge of going bankrupt. I want that to be taken cognizance of by the honorable members. In India, the gross non-performing assets, the NPAs, of scheduled commercial banks has hit a 6-year low of 5.9% in FY22. So China, 4,000 odd banks are on the verge of going bankrupt and our NPAs are improving. Sir, again on government debt. Government debt is one of the important criteria with which you measure the economy. The debt to GDP ratio of many countries are in triple digits. And that includes Japan, Greece, Italy, Bhutan, Singapore, US, Portugal, Spain, France, Sri Lanka, and Canada. Whereas the central government very consciously has controlled its debt, and it is at 56.29% of the GDP at the end of 21-22, compared to 59.9% pegged in the revised estimates for that year. So even from the revised estimates, we have brought it further down. So even when comparing the general government debt, which means the center and the states, India is in a far better position than its peers. According to the IMF data, it's not me saying it, with a general debt to GDP ratio of 86.9, which includes both center and states. So I just want to draw the attention of members. So globally, if the situation is pandemic, Russia, waves, second wave, third wave, and the Ukraine conflict and the disruption in the supply chain, if globally each country is in this situation, India's position, I've just given you some few comparisons. Today, sir, this morning, we have announced the GST collection for the entire month of July. July 22, we have garnered the second highest level ever since the introduction of the GST, which is 1.49 lakh crores. Second highest. And compared to the last year, this is one of the highest amount. This year in April, you may be aware, I'd like to gently remind, in April 2022, it was 1.67 lakh crores, which was the highest reached
Now we've got in July 22 the second largest, which is 1.49. This is the 5th consecutive month that collections have been above 1.4 lakh crores. GST collections have been above 1.4 lakh crores consecutively for 5 full months. So the manufacturing purchasing managers index, which has also come out only in the morning, I think, and it is at 8 months highest number of 56.4 for July. So the trend for output and new orders are strengthening, so the economy is really getting even more robust. The PMI rose from 53.9 in June, I said it is 56.4 in July, well above the 50 level, which is what shows it separates that there is no addition if it is below 50, but it has remained at 50 level, separating growth from contraction for a 13th month in a sequence. So India's 8 infrastructure sector, all of them grew in double digits for the 2nd consecutive month in June. Data released on, for the month of June showed the core sector grew at 12.7% in June year on year. So strictly speaking, sir, Indian economy in every one of these aspects is showing very positive signs. I remind myself about the line Honorable Member Supriya Sule said. You know, it's enough, you can't be going on talking about earlier days. Now you've had enough number of time. She compared also very untypically to a married woman who enters the house. She gets to be a part of that house and you don't anymore say we are new, whereas what has been there and all that. But in these kind of situations where constantly questions are based not so much on facts, I'm not talking about Supriya ji alone, but in general, when facts will have to be reminded, because the way in which questions are being asked as though it didn't exist earlier. Even now the leader of opposition said, please accept that inflation existed before the pandemic also. Inflation exists, sir. At what level is the question? So conceding to that point, I have no difficulty. Inflation exists. But at what level? And that is why, if you will pardon me, Honorable Member, I would like to go back to recalling. Let's not forget, for a small taper tantrum, I'm saying small today, of the Fed of 2008, the problem continued till 13, that the Indian economy became a fragile 5 country. But what are we today in? Fastest wave. Pandemic, second wave, Omicron, India, Russia, Ukraine, supply chain, even today largest supply component suppliers around in China still under lockdown in several areas. In spite of that, we have held the inflation well within 7 or even below. And that has got to be recognized. Oh yes, sure, I will speak. So, just gently, some bullets will have to be remembered. हमें याद करना आवश्यक है, क्योंकि बार-बार 8 साल पहले का यूपीए का क्यों बात कर रहे हैं? हाँ, बात करने का आवश्यकता नहीं है. हम बोल सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, शायद और बेहतर कर भी सकते हैं, मगर हम क्यों बार-बार उसको जिक्र करना चाहिए? क्योंकि उसका इंटेंसिटी क्या है? एक ही था पैंडेमिक भी नहीं है, वो एक फेड का प्रॉब्लम था, यूएस रेट बढ़ा दिया, उनका लिक्विडिटी कंप्रेस करने के लिए कोशिश किया, वो सिर्फ एक प्रॉब्लम था, उसके असर इतना पड़ा कि भारत देश फ्रजाइल 5 देश में एक हो गया था 2013 में. मगर अब तो हम झेल रहे हैं पैंडेमिक, सेकेंड वेव, ओमिक्रॉन, चाइना में जगह जगह पर लॉकडाउन, और आज भी ग्लोबल ट्रेड नॉर्मलसी तक नहीं पहुंचा. फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं हमारी इन्फ्लेशन को 7 और 7 के नीचे रखने के लिए.
इसीलिए मैं उदाहरण कोट करना चाह रही हूं सर। रिटेल इन्फ्लेशन वॉज मोर देन 9%, अभी 7% है। 7 से कम होने के ही प्रयत्न हर बार हुआ है, 2 बार उसका अच्छा नतीजा भी पहुंच गए, मगर 9% से ज्यादा 28 मंथ्स को आप एक इकट्ठा करके देखेंगे, उसमें 22 मंथ्स में 9% से ज्यादा था। यूपीए के कार्यकाल में 9% से ज्यादा। अभी जब हम 7 में हैं और 7 से नीचे कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमें बोला गया इन्फ्लेशन, आप क्या कर रहे हो इन्फ्लेशन। 22 मंथ्स को आपने 9% से ज्यादा रखा इन्फ्लेशन, वो याद करिए ना प्लीज एक बार। फिर इन्फ्लेशन उसी समय में डबल डिजिट्स में गया, 10% से ज्यादा में गया। 9 बार यूपीए सरकार के समय 9 बार डबल डिजिट में था इन्फ्लेशन। वो भी याद करना चाहिए जब हमें मांग रहे हैं कि 7% से कम होने क्यों नहीं हो रहे। करो, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मोदी जी ध्यान रख रहे हैं उन सब के ऊपर, जरूर करेंगे, मगर आप 22 मंथ्स में देश की जनता ने इसीलिए आपको दानिश जी, आप उठकर सही प्रश्न पूछे। ओ ठीक है सर, उनका नाम अगर दोबारा उठेंगे तो नाम ठीक है सर। डिलीट कर दो सर। इसीलिए हमें चुना, इसीलिए मोदी जी को वोट मिला, और इसीलिए कि वोट भी मिला, स्टेबल गवर्नमेंट भी मिला। 7% से नीचे ही रख रहे हैं हम इन्फ्लेशन को। जो जनता के ये एक्सपेक्टेशन था उसके अनुसार वोट दिया, उसके अनुसार ही हमारा डिलीवरी भी हो रही है। याद रखना चाहिए सर, इतना तेज आकर के नहीं क्या चल रही है। 7%, 22 मंथ्स 9% से ज्यादा, 9 बार डबल डिजिट इन्फ्लेशन। ये करने वाले सरकार थोड़ा सोच समझ करके हमारे ऊपर आरोप डालना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा मैं इन्फ्लेशन के ऊपर और बोल सकती हूँ सर, मगर समय भी हो रहा, आगे बढ़ती हूँ। महंगाई कम कैसे करोगे ये बताओ। अरे 7 से कम हो रही है जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाजार में आग लगे हैं। आपके विभाग की क्या कदम समस्या है। माननीय स्पीकर सर, मैं दोबारा, क्योंकि हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आदिर जी एक हाँ ठीक है, पार्टी कांग्रेस पार्टी के लीडर, ठीक है, एक इकोनॉमिस्ट का नाम लेकर के बोले कि देखो इन्होंने ऐसे आपके खिलाफ बात की है। सर, इनको आदत है एक आध इकोनॉमिस्ट का ही नाम लेंगे, बाकी दुनिया में इकोनॉमिस्ट का नाम नहीं लेंगे। हाँ, उनके आदत है। और ये भी है कि उन्हीं इकोनॉमिस्ट के बारे में, उनका टिप्पणी के बारे में ही जिक्र करते रहेंगे, जैसे अभी एक इकोनॉमिस्ट का नाम लिए। मगर कौशिक बासु जी के नाम लिए, और हाँ रघुराम राजन भी है, क्योंकि वो उन्होंने बोल दिया। मैंने सोचा एक बार रघुराम राजन जी का बयान एक बार ध्यान दिलाएंगे। हाँ, वो भी सही बात है। खुद अधीर रंजन जी इकोनॉमिस्ट है, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है। हम जब महंगाई घटाना चाहते और कुछ नहीं चाहते, अगर मैं आप लेंगे आप ठीक है, आप इकोनॉमिस्ट सर। शनिवार के दिन रघुराम राजन जी ये बात बोले कि आरबीआई ने अच्छा काम किया। RBI has done a good job in increasing the foreign exchange reserve in India, insulating India from problems being faced by neighboring countries such as Pakistan and Sri Lanka. So Pakistan, Sri Lanka का जो problems है, वो problems हमें नहीं होने देना चाहिए। ऐसे करके RBI ने अच्छा काम किया है, ये उनका टिप्पणी। और ये भी है
Differentiating India from its vulnerable neighbors, Sri Raghuram Rajan further added that New Delhi is less indebted, calling it a good sign. मैंने अभी debt to GDP figures पढ़ा, numbers भी पढ़ा आपके सामने, उसका रघुराम राजन जी भी जिक्र कर रहे हैं जो दिल्ली, न्यू दिल्ली के सरकार डेट को कम रखना अच्छा काम किए हैं और भी किए। माननीय प्लीज एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट। माननीय सदस्य एक मिनट। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, आप हर सेकंड में उठना ये उचित नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है आपका, बिल्कुल नो गलत तरीका आपका है। आप माननीय मंत्री जी, सर रघुराम राजन ने ये भी कहा है, वी हैव सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, RBI has done a good job in increasing the reserves. We are not having problems like Sri Lanka and Pakistan. Our foreign debts are also less. इतना स्पष्ट बोले। नो प्लीज, तरीका ठीक नहीं है बिल्कुल। आप मंत्री जी उनकी बात पर मत कहिए, मैं ठीक है सर, देख रहा हूँ सब चीज। ठीक है। और इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत चिंता कर रहे हैं आदिर रंजन जी। रघुराम राजन दोबारा इस विषय में क्या बोले? At present, there is inflation all over the world. RBI is increasing interest rates, which will help in reducing inflation. Most inflation is in food and fuel. As we can see, food inflation is coming down in the world and will decrease in India also. Sir, ये RBI के तरफ के असेसमेंट रघुराम राजन जी ने बोला और उससे ये भी समझ में आ रही है कि इंडियन इकोनॉमी कहाँ है और इन्फ्लेशन भी भारत देश में कम ही हो रही है। मगर but of course he did not say about measures we have taken from the government, from the Ministry of Finance, to reduce the cost of imports on say like edible oil, masoor dal and so on. मैं उसको जिक्र करना चाह रही हूँ सर। Central government has reduced customs duty on crude palm oil from 35.75, Adir ji suniye, 35.75% to first 8.25 and now to 5.5% only. So drastically bringing down the duty and making it possible to bring edible oil, in this case palm oil, so that common people and their edible prices, oil prices can come down. On sunflower and soya bean oil, both of which largely come from Ukraine and Russia, we have also sourced it from other countries. The customs duty has been reduced drastically from 38.5% to 5.5%. We've taken out the customs duty so that come घर पर edible oil भारत देश में पहुंचे, जनता को सस्ते में edible oil मिले. Second, sir, TRQs मतलब rates और tariff rate and quota restrictions आमतौर पर होता है. Nearly for 20 lakh metric ton of sunflower and soya bean oil, TRQ has been made nil. आप जितने चाहे इंपोर्ट करो, ड्यूटी बिल्कुल जीरो में इंपोर्ट करो, जिससे सस्ते में सोयाबीन ऑयल भी आएगा, सनफ्लावर ऑयल भी आएगा. सो स्टेप्स क्या आपने उठाया प्राइसेस कम करने के लिए? एक एक करके मैं बोल रही हूं. नेक्स्ट, the prices of edible oil have corrected sharply in June compared to May, with maximum decline of 18.1% coming in palm oil prices.
The other categories are sunflower oil, soya bean, groundnut, mustard, and vanaspati have also seen correction in the range of 1.7%, 1% to 7% in the last 1 month. Sir, मुझे दुख लग रहा है बाहर जाकर के प्राइस राइज के ऊपर सरकार भाग रही है, डिबेट नहीं कर रही है। कहने वाले कांग्रेस आज जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है। बाहर वो भाग रहे हैं बाहर, जवाब सुनने का क्षमता तक नहीं है उनको। यही लोग पिछले एक सप्ताह से करो बहस माननीय मंत्री जी, what have I done? They can go out, I should say. Sir, customs duty on masoor has been reduced. माने सर प्लीज बैठिए। प्लीज बैठिए सर, बैठिए। मैडम प्लीज बैठिए। माननीय मंत्री जी, सर पिछले customs duty has also been exempted on coal, met coke, coking coal and ferronickel. ये सब भी स्टील इंडस्ट्री को भी चाहिए, एमएसएमई इंडस्ट्रीज को भी चाहिए। उनको उनके सुविधा के लिए उन विषयों में भी कस्टम्स ड्यूटी ने कम करवाया। हमने कस्टम्स ड्यूटी को कम करवाया। फिर स्टील प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में अभी गिरावट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10%, आई थिंक ऑलमोस्ट 1/10 उसमें कमी हुआ है, क्योंकि we have reduced the rates of the duties and imposed export duty. Prices of domestic benchmark hot rolled coil steel at the traders end have slipped by about 8%, or about 5,500 per ton since May 18. So top steel makers have also quoted prices for June that are lower by 4,500 or 5,500 a ton. इसका सरासर बेनिफिट एमएसएमई को मिलेगा, जिससे उनका कारोबार में अच्छा चलने में इकोनॉमी भी उसका बेनिफिट उठा सकेंगे। In textiles, sir, customs duty on key raw products like nylon chips, nylon yarn and caprolactam
have all been rationalized. Anti-dumping duty was revoked on key raw materials like viscose fiber, PTA and other fibers and yarn, so that raw material for textile industry will also be available. Customs duty on raw cotton has also been fully exempted. Raw cotton का बहुत ही डिमांड और आजकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसके बारे में बहुत चर्चा है, उसमें भी ऐसे करके मैं बहुत सारे और भी उदाहरण दे सकती हूं जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए और सस्ते में रॉ मटेरियल हमारे लोग को मिलने के लिए बहुत सारे कदम हमने उठाया. 38 lakh tons of metric tons of free food grains were provided for every month for 8 months to 75.8 crore beneficiaries. हम सबको मालूम है. This year too वो September 22 तक हमने अनाउंस कर दिया. सिर्फ एक विषय माननीय अधीर जी ने पूछा मगर निकल गए. सीपीआई के बारे में बात करो, डब्ल्यूपीआई के बारे में बात करो. सर 2012-13 में सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन 10.505 था. 13-14 में 9.38 था परसेंटेज. 14-15 में 5.83, 15-16 में 4.91. ऐसे करके हमारे कार्यकाल में 6.16 2020-2021 में पहुंचा, मगर वो भी 10% से तुलने में कुछ भी नहीं है. 10% था 2012-13 में, ये याद रखना चाहिए सर. और एक और लिस्ट ऑफ गुड्स के बारे में मैं बोलना चाह रही हूँ. 2011-12, 12-13 में फूड आइटम्स का टोटल 12.34 था, फेरस अभी 1920 में 7.35. ऐसे करके हर लिस्ट में अभी जो रेट है सर, चाहे वो फूड ग्रुप हो, पान सुपारी टोबैको हो, फ्यूल एंड लाइट हो, हाउसिंग हो, क्लोथिंग हो, फुटवेयर हो, सभी विषयों में सीपीआई इंडेक्स का, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का नंबर कम है. वो डबल डिजिट में, अभी हमें सिंगल डिजिट में है. सो ये सब याद दिलाने के लिए मैं बोल रही हूँ. और एक और विषय, क्योंकि विदेश से हमें बार बार कंपेयर कर रहे हैं हमारे सदस्यगण. मैं जब रघुराम राजन जी का बयान बोलते हुए बोले कि भारत देश का हालात श्रीलंका से बेटर है और बांग्लादेश से बेटर है, वो रघुराम राजन जी का बयान है. और बार बार बहुत सारे बार लोग बोलते हैं अरे बांग्लादेश को देखो, वो इतना हमसे ज्यादा अच्छा चल रहे हैं और हम ऐसे रुक गए. मैं सिर्फ एक आध सच्चाई इस हाउस के सामने रखना चाहती हूं सर. बांग्लादेश का आज आईएमएफ के सामने 4.5 बिलियन का लोन डिमांड कर रहे हैं क्योंकि उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम है. सो बांग्लादेश को कंपेयर करने वाले ये भी याद रखें कि बांग्लादेश आईएमएफ के सामने 4.5 बिलियन मांग रहे हैं. ठीक है सर. माननीय सदस्य, आपको ज्यादा समस्या है क्या? बार बार अभी अब बार बार आप भी रहिए, आप सर. श्रीलंका ने जब जवाब मिल रही है सर, और उस जवाब से ये पता चल रही है कि भारत देश का हालात बहुत बेहतर है, अरे बांग्लादेश के साथ आप क्यों कंपेयर कर रहे हो? बांग्लादेश को कंपेयर करने वाले कितने नहीं है हमारे. माननीय सदस्य, आपको कह रहा हूं मैं कि आप सदन में कैसे बैठते हैं उसकी गरिमा बना के रखें. पैर पे पैर ऊपर रख के नहीं बैठा जाता कभी. मैं नाम से नहीं बोल रहा ताकि अच्छा नहीं लगे लोगों को, इसलिए इशारे में समझ जाए सब. इशारे में समझ दो. सो बांग्लादेश से कंपेयर क्यों कर रही हो? श्रीलंका से कंपेयर क्यों कर रही हो?
इसी विषय के ऊपर बहुत वरिष्ठ नेतागण ऑपोजिशन में, भारत भी श्रीलंका के जैसे उसी रास्ते पर चल रहे, बोला नहीं है। और अब जब मैं जवाब दे रही हूं, सर अरे आप श्रीलंका से क्यों कंपेयर कर रही हो? सभी देश अच्छा रहना चाहिए सर, मैं किसी देश को बुराई नहीं मांग रही, श्रीलंका हो बांग्लादेश हो सभी देश अच्छा रहना चाहिए, मगर हमें टोक टोक करके बोला गया कि हमारे देश भी श्रीलंका जैसे। शर्म है ऐसे बात करने वाले नेतागण को, शर्म। सर ये भी बोला गया, What happened? Regarding the GST on the food grains. I'll answer all of that. Now already 1 hour is over. नो, आपको मैंने अलाउ नहीं किया, आपके बैठ की मंत्री जी, मैंने अलाउ थोड़ी किया उनको। सर आप ऐसे तो सभी प्रश्न, मुझे दुख हो रही है सर, मुझे दुख हो रही है कि 5 घंटे चल सकते हैं विवाद और डिस्कशंस, मगर जवाब थोड़ा लंबा चौड़ा हो गए 1 घंटा, वो भी वरिष्ठ। कम ऑन प्रेमचंद्र जी, मैं जवाब दे रही हूं हर एक पॉइंट के लिए सर, लंबा हो रही है, मैं क्या करूं? इतने सारे विषय उठाया, उसका जवाब देना है कि नहीं देना है? ये भी बोला गया कि आप आज का हालात में और डिमोनेटाइजेशन से कंपेयर करते हुए अभी भी लिक्विडिटी ज्यादा है इकोनॉमी में, आपने ये ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। मैं बोलना चाह रही हूं सर, लॉकडाउन के समय और उसके बाद आत्मनिर्भर भारत के अनाउंसमेंट के समय मुझे बहुत सारे लोग सुझाव दिए कि प्रिंट करो करेंसी, प्रिंट करके सबको बांटो, जनता को न्याय करो, उनके हाथ में पैसा रखो। ये सब आया सर। हाँ? मुझे वो सब बोल करके सर, अभी लिक्विडिटी देखा कि कितना हो गए, डिमोनेटाइजेशन से अभी तक लिक्विडिटी इतना हो गए, आपने प्रिंट करा इसीलिए। सॉरी, डेटा लीजिए, फैक्ट्स के अनुसार हाथ में रख के बात करिए सर। ये क्या है सर? सर 2018-19 में इंडिया में 22% था सर एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी। ये मैं सेंट्रल बैंक का बैलेंस शीट के बारे में बात कर रही हूं, जिससे समझ में आता है कितना प्रिंटेड है वगैरह। 22%, 1920 में 27%, 2020-21 में 29% और 21-22 में 26%। ये सेंट्रल बैंक हमारा रिजर्व बैंक का बैलेंस शीट के बारे में बात कर। यूएस से कंपेयर करिए, बांग्लादेश श्रीलंका फेलियर है, मगर मैं उसका जवाब देना चाह रही हूं सर। जी ने किया डिलॉइट्स का, वो बोले कि 90% ऑफ इंडियन इंडस्ट्री लीडर्स फील that GST has made doing business easier by bringing down barriers across the country. और ये भी बोले GST regime has also positively affected the prices and cost of goods and services to end consumers and along with helping companies optimize their supply chains. So GST के बारे में स्टडीज के द्वारा जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपके सामने रख रही है। फिर एमएसएमई के बारे में भी बहुत ही उनका कंसर्न था, उसमें भी माननीय मंत्री जी, जीएसटी एमएसएमई के ऊपर मैंने बोल दिया कि क्या क्या तरीके से उनको रॉ मटेरियल सस्ते करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये भी मैं बोलना चाह रही हूँ, पैंडेमिक के समय इमरजेंसी क्रेडिट लिक्विडिटी गारंटी स्कीम उनको दिया, दैट हैज सेड, एंड ये एसबीआई का रिसर्च से आए हुए फैक्ट्स है। 13.5 lakh MSMEs worth 1.8 lakh crores have been saved from
slipping to be NPAs. 13.5 lakh MSMEs को 1.8 lakh करोड़ रुपया पहुंच करके उनको सर्वाइव करने का चांस दिया गया है. This is equivalent to 14% of the outstanding MSME credit being saved from becoming NPA. Sir, so RBI डेटा भी एक है सर जो उनको उपयोगी होगा उनको जवाब देने के लिए. टोटल ये बात बार बार उठाया गया कि आपने पेट्रोल डीजल में बहुत कमा रहे हैं, सेस के द्वारा कमा रहे हैं, इतने कमा दिया वो चला गया कहाँ मालूम नहीं हो रही है, स्टेट्स को कम हो रही है. मैं आरबीआई का डेटा कोट करते हुए आप सबके सामने विषय रखना चाहती हूँ. आरबीआई डेटा सेस total developmental expenditure incurred by Modi government between 2014 to 2022 is 90.9 lakh crore, far higher than is being alleged by some sections of the opposition. In contrast, 49.2 lakh crore was spent between 2004 and 14. 2004 and 14 के अंदर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इतना था 49.2, whereas 2014 to 2022 90.9 lakh crores have been spent on development expenditure. जरूर पैसा एक्साइज जो सेस और ड्यूटी कलेक्ट किया वो सब नीचे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को जाता है. केंद्र सरकार के पास जमीन नहीं है, मगर जमीन केंद्र